देवेंद्र सर, आप शेयर सजेस्ट करना चाहें तो शेयर सजेस्ट करें, या फिर अगर आप कोई बिजनेस समझाना चाहें, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से आपको सुनता रहा हूं तो मुझे ये पता है कि जब आप कोई बिजनेस समझाते हैं तो फिर उसके फंडामेंटल से लेके सब तमाम चीज़ें आप क्लियर कर देते हैं। तो अगर आप वो चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहें अपने हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से शेयर्स या बिजनेस हैं जो आपको लग रहा है कि फ्यूचर के लिए बेटर हो सकते हैं इस लेवल पे मार्केट में। फेयर पॉइंट। प्रयत्न करूंगा आपके एक्सपेक्टेशन के साथ में रहने के लिए। अ, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दो जगह पे जहाँ पे हमें एक कन्विक्शन भी है और कॉन्फिडेंस भी है, ये दो बिजनेस के माध्यम से थोड़ा समझाने की प्रयत्न करूंगा। एक बिजनेस है वो फाइनेंस सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, वो जियो फाइनेंस की हम बात करेंगे। जो हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल अनफोल्ड हो रहा है, उसके अंदर करीबन 4 prominent verticals are emerging for this company. One of course I think is the AMC vertical, which is वहाँ पे जो उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में टाई अप करके जो ETF प्रोडक्ट्स लाने की उन्होंने एक प्रस्ताव रखी है, तो ये आई थिंक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहेगा, because ultimately AMC sector is going to grow with the higher amount of money coming in the hands of investors. They will be investing money more into the mutual fund kind of products. दूसरी तरफ देखें तो इंश्योरेंस जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस के अंदर भी आई थिंक मैं समझता हूँ कि दिस कंपनी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांगली पोजिशन, एंड इन ए मैटर ऑफ टाइम दे मे प्रोबेबली अनाउंस आई थिंक सम गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस मॉडल इन इंश्योरेंस एज वेल। तो ये भी एक स्ट्रांग प्रपोजिशन दिख रही है। मेरा ऐसा समझना है कि अगेन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, अगेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर माध्यम से फंड्स जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द हायर जीडीपी। ऐसा समझता हूँ कि इंश्योरेंस वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट सेक्टर इन द फाइनेंशियल सेगमेंट, कि करीबन 20% के एवरेज ग्रोथ रेट से अगले 5 या 10 साल के लिए वो बढ़ता रहेगा। तो इंश्योरेंस वुड बी आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले एज आई सी इट। Third vertical, which I see it is a vertical where the distribution of wealth products as a third party wealth product, जिसके अंदर लोन प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो माध्यम है उनके अंदर ये कंपनी काफी हद तक स्ट्रांग रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, द एनबीएफसी सेक्टर, इसके अंदर ये कंपनी एक सिग्निफिकेंटली लार्ज बेस के ऊपर काम चालू कर रही है। करीबन 1,40,000 करोड़ की नेटवर्क के ऊपर उनकी बुक साइज करीबन 7 लाख करोड़ के आसपास होनी बनती है। 7 लाख करोड़ की बुक साइज बनती है तो डेफिनेटली आई थिंक दे वुड बी अमंग द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री एज फार एज द एनबीएफसी सेक्टर इज कंसर्न, द लार्जेस्ट, एंड विद इन द बैंकिंग स्पेस आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट। मैं ऐसा समझता हूँ कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट उनके पास बी टू बी सेगमेंट के अंदर जो किराना मर्चेंट वाला का या मर्चेंट का जो है, वो मार्केट उनके पास करीबन अप्रोक्सीमेटली 50 लाख करोड़ का मार्केट वो एड्रेस करने जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन द ग्राउंड फॉर द रिटेल स्टोर्स दैट दे हैव, उसके हिसाब से देखें तो बी टू सी यानी कंज्यूमर लैंडिंग के अंदर भी आई थिंक दे विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन अंडर द सबवेंशन प्राइसिंग मॉडल विच दे प्रोबेबली वुड रिसोर्ट टू। सो मेरा ऐसा मानना है कि चार जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है, तो चारों वर्टिकल के अंदर ये कंपनी बहुत स्ट्रांगली पोजीशन हो रही है। एंड आई थिंक द डिस्टिंक्ट एडवांटेज दैट दे हैव इज मनी ऑन वन साइड एंड कस्टमर ऑन द अदर साइड। What they need to do is possibly, I think, use the platform for generating the business by using the technology जो उनके पास जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल है। So this company is starting with a very very promising proposition. That is what I like to put it across. The second company जहाँ पे हमें confidence बनता है is related to travel and tourism sector. And there is it's a small company which is recently coming into the limelights also. Uh, they are the company's name is Praveg. The company is largely in the business of hospitality business, कि जहाँ पे वो टेंट सिटी के माध्यम से अपना कारोबार चलाते हैं। In the leisure tourism and the spiritual tourism business, India is expanding very very fast. एंड ये कंपनी जो है उन्होंने करीबन आज की तारीख में 12 जैसे लोकेशन के अंदर अपने रिसोर्ट्स चालू किए हैं। एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इंक्लूडिंग एट लक्षद्वीप। दे विल बी स्टार्टिंग देयर बिजनेस आई थिंक इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक विद 25 लोकेशंस। करीबन 700 रूम्स की कैपेसिटी बनेगी उनके पास। एंड एवरेज रूम रेट आई थिंक विच दे आर कमांडिंग टुडे इज अराउंड क्लोज टू 10,000 रुपीज। So मेरा कैसा मानना है कि I think this company is possibly sitting at a high potential as far as growth is concerned.
एंड बिकॉज जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर की हम बात कर रहे हैं, तो ये मनी इज गेटिंग स्पेंट ऑन द टूरिज्म इक्वली, एंड इंडिया इज ओपनिंग अ बिग टाइम इनटू द टूरिज्म, इंक्लूडिंग इन स्पिरिचुअल टूरिज्म। जैसे हमने देखा अयोध्या के, जहाँ पे कंपनी ने अपने टेंट सिटी रखी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वाराणसी है। दिस आर सम ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन के जहाँ पे कंपनी ने काफी हद तक अपना कारोबार बढ़ाया है। I feel these two areas would remain relatively more promising for investors from long-term investment perspective.